नरेंद्र मोदी 2015 में भी राष्ट्र दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित उन्हें किया गया था, जिसके बाद अब पुनः दूसरी बार प्रधानमंत्री को इस राष्ट्र दिवस समारोह में आमंत्रित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि 1948 वो वर्ष था जब राजनयिक संबंध स्थापित हुए, लेकिन जो आज़ादी मिली मॉरिशस को वो 1968 में जाकर मिली। तो 97 वर्ष आज़ादी के। Distinguished guests, ladies and gentlemen, the national flag, our country's foremost national symbol, is proudly floating at the top of the mast. Red, blue, yellow, green. The color red representing the struggle for freedom and independence. Blue represents the Indian Ocean, in the middle of which Mauritius is situated. Yellow, the new light independence. And green, the agriculture of Mauritius and its color throughout the 12th month of the year. It is a solemn moment of great pride, reaffirming the Mauritius identity. Corporal Richardson and Woman Police Sergeant Rajana were the flag raisers and bearers respectively for our National Day. Le quadricolore rouge, bleu, jaune et vert qui flotte fièrement dans le ciel cornusien, le public qui est réuni au Champ de Mars pour vivre ce moment solennel et exceptionnel.
Distinguished guests, ladies and gentlemen, brace yourself for a thrilling, awe-inspiring aerial display by the air warriors of the Mauritius Police Force in collaboration with the Indian and French air arms. Look to your right, the skies welcome the Mauritian Chetak helicopter from the police helicopter squadron, gracefully approaches the skies and proudly shooting the Mauritian flag. Now direct your attention to the sky and you will witness a spectacular three-helicopter formation by the Mauritius Police Force Chetak helicopters flying in big formation called the sign Eagle. Leading the formation, Wing Commander Chima alongside ASP Dukan. To the left, the helicopters commanded by SP Bobichan and WDASP Hamji. And to the right, piloted by SP Bolaki and DASP Chedi. And to further symbolize the unbreakable bond of friendship, the Indian Navy's MH-60R seamlessly complements this formation. And just behind the Chetak, entering the display zone, is the MH-60R Seahawk, the latest addition to the Indian Navy's Air Squadron 334, proudly trooping the Indian tricolor. This cutting-edge maritime aircraft symbolizes India's unwavering support and strong strategic partnership with Mauritius. Le fly past ici dans le ciel port-lusien, mesdames et messieurs, distingués invités du beau spectacle, comme le veut la tradition. Et auparavant, le Parade Commander, lieutenant-colonel Gopi, a procédé au retrait de la garde d'honneur. And distinguished guests, the skies will now showcase a proud display by one Dornier aircraft, the Sentinel of the National Coast Guard under the Mauritius Police Force. And this aircraft conducts surveillance, search and rescue, and protect the nation's exclusive economic zone. Oui, des appareils que nous avons l'occasion, lors des célébrations, de voir de beaucoup plus près. On parle bien sûr ici de sécurité. Ce sont des appareils qui sont très utiles en matière de sécurité. And now you can see to your right the Dornier aircraft entering the zone. It is commanded by Commander Ajit Paris Bogar and his crew, Commandant Gautam Narendra, Lieutenant Commander Aman Sharma, and Inspector Lizette. And the spirit of international unity continues, now approaching from the horizon the Casa Transport aircraft
from the French Air Arm, flying over the Champ de Mars. This display symbolizes deep-rooted friendship between France and Mauritius. And now, as we honor the bravery and commitment of the police helicopter squadron, known for their unwavering motto, braving skies, saving lives, now presents a magnificent aerial salute to our distinguished guests. Watching all as 40 helicopters execute this synchronized tribute, a moment of sheer pride and honor. Le spectacle ici avec ce flypast, les hélicoptères que vous venez d'apercevoir également. And after this spectacular display of helicopter and flypast, distinguished guests, ladies and gentlemen, next on the National Day Celebrations program, there will be march past by Mauritius disciplined forces. Mesdames et messieurs, distingués invités, à présent, le march past. Distinguished guests, ladies and gentlemen, leading the march past today is the Mauritius Police Band. Their musical performance earlier this morning has set the tone for today's celebrations. These dedicated officers of the Mauritius Police Band are entrusted with an important responsibility of providing musical accompaniment for ceremonial, official state, and police functions. Mauritius police play a vital role in ensuring the safety and security of both citizens and visitors, dedicating themselves to maintaining law and order. This special mobile force, a paramilitary unit, plays a crucial role within the Mauritius police force. Its main responsibility to safeguard both internal and external security across the island. The GIPM, Groupe d'intervention de la police mauricienne, an elite unit of the Mauritius Police Force, enhancing the grandeur of the march past, the melodies of the SMF Bagpipers Band. We are also honored to have the detachment from the French 2e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine des forces armées de la zone de l'océan Indien. We are also honored to have participation of Seychelles People's Defense Forces. The Special Support Unit, another paramilitary unit of the police force. The Special Response Group of the Special Support Unit.
the Women Police Unit of the Mauritius Police Force. Marching with pride, the Indian contingent from the Indian naval ship Imphal, commanded by Captain K.K. Chaudhary, docked at the Port for National Day. It symbolizes our strong ties. The Indian naval band elevates to this moment with patriotic melodies. Officers of the National Coast Guard, a paramilitary unit of the Mauritius Police Force, dedicated to ensuring maritime safety and securing our exclusive economic zone. The NCG Barcos, elite marine commandos trained to combat piracy at sea and safeguard the waters of Mauritius. Officers of the police helicopter squadron, experts in aerial surveillance, search and rescue, and supporting ground operations. Adding a unique rhythm to this march past, the prison band and the Mauritius Fire and Rescue Service band. The Mauritius Prison Service is among the main components of the criminal justice system. Male and female prison squads play a crucial role in ensuring security, rehabilitation, and reintegration within our society. And the skilled officers of the Mauritius Fire and Rescue Service play a key role in responding to fires and disasters. Officers of the Mauritius Revenue Authority, responsible for tax collection and enforcing of revenue laws in the country. The Fisheries Protection Service asked to enforce regulations and protect marine biodiversity while supporting the growth of the fishing industry. And bringing energy and flair to this event through their baton twirling show. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the Major and Majorette of the Queen Elizabeth College. You will have the privilege to see the Major and Majorette performing later on during the ceremony. Les Majors et Majorettes du Queen Elizabeth College, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de revoir un peu plus tard, mesdames et messieurs. And concluding the march past, teams of dedicated volunteers, the National Youth Council, Fellowship First Aiders, St. John Ambulance, Mauritius Red Cross, Professional First Aiders, the Mauritius Scouts Association, Pathfinders Youth Club, Girls Guide, Association of First Aiders, Mauritius Recreational Council. And we are also honored to have high-level athletes and para-athletes who have made our flag shine high at international sporting events. Oui, les athlètes et para-athlètes, Fabrice Bolloc, Julie, Noémie Alphonse, Nouvelle Philippe, notamment Anaïs Angeline, qui ont brillé au plus haut niveau. Les para-athlètes qui se préparent pour les mondiaux justement en septembre et octobre, les mondiaux de para-athlétisme qui vont se tenir en Inde, à New Delhi. Le match post laisse dans quelques instants au défilé des véhicules, principalement des différentes unités de la force policière. Now we proceed with the defile of vehicles from the various branches, units and organizations of the Mauritius Police Force, the Mauritius Fire and Rescue Service, amongst others, starting with the traffic branch.
The motorcycles and vehicles of the traffic branch are key assets that support the branch in enforcing traffic regulations and promoting road safety. In addition, the branch is responsible for issuing and regulating driving licenses throughout Mauritius and Rodrigues. Le Traffic Branch, mesdames et messieurs, distingue les invités, unité qui abat un gros travail au quotidien sur les routes afin d'assurer la sécurité routière et de guider les automobilistes. Next in view, a défilé of the armored vehicles highlighting the strength and preparedness of the Special Mobile Force, a key paramilitary unit within the Mauritius Police Force. Structured as a motorized infantry battalion, the SMF includes 5 companies, 2 squadrons, an engineer squadron, and a disaster response unit. Equipped with armored vehicle, the SMF plays a crucial role in safeguarding both internal and external security. Et également ce véhicule va nous traverser le groupe d'intervention de la police mauricienne. Et on parle aussi du maintien de l'ordre avec le Special Mobile Force jouant un rôle crucial. And taking part in this défilé of vehicles and officers of the Special Support Unit displaying some of the specialized equipment used in their operations. The SSU plays a crucial role in assisting the regular police during civil unrest, providing security for sensitive locations. And our défilé of officers and marine commanders, vehicles and boats of the National Coast Guard with an exclusive economic zone of 1.8 million square kilometers. The NCG is tasked with protecting Mauritius' maritime wealth and assisting seafarers. It plays a vital role in enforcing laws, safeguarding maritime zones and combating illegal activities. Officers of the scene of crime play a crucial role in investigating and documenting crime scenes. The Emergency Response Service tasked to respond rapidly to emergencies. The Police du Tourisme, ensuring tourist safety in Mauritius. The Police de l'Environnement. And with a committed team of approximately 200 officers, 14 fisheries posts operating round the clock, the Fisheries Protection Service plays a crucial role in safeguarding and preserving the marine ecosystem. And concluding the défilé, the Mauritius Fire and Rescue Service showcasing their state-of-the-art equipment. But prior to that, we have officers of the Mauritius Revenue Authority. The Mauritius Fire and Rescue Service showcasing their state-of-the-art equipment. This includes the aerial ladder, 32-meter high vehicle, the hazmat vehicle, and the swift-water rescue vehicle, and the firefighting and water tanker, all vital in responding to emergencies. Le véhicule de Mauritius Fire and Rescue Services, les pompiers qui viennent de nous traverser, mesdames et messieurs, distingués invités sous une pluie fine, ici au Champ de Mars. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are honored to have the police band, along with the prison and Mauritius and fire rescue service bands and the SMF bagpipers perform at today's National Day celebrations. These officers who have received specialized training in India bring their refined skills to the stage, adding a unique cultural touch to the event. Their performance is testament to the strong ties and cooperation between Mauritius and India, further enhancing the spirit of unity on this special occasion.
Fire and Rescue Service bands, we now proudly present a baton twirling show by 43 Majorette and A Major of the Queen Elizabeth College. Practiced since 1972, baton twirling promotes discipline, perseverance, and leadership. Trained by Mrs. Jennifer Ning, a former majorette of the institution, the performers showcase their talent and dedication in this captivating display.
A warm round of applause to the Major and Majorette for their spectacular performance, beautifully implemented by the wonderful musical accompaniment of the police, prison and Mauritius Fire and Rescue Service bands. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'était les majors et majorettes du Queen Elizabeth College. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'm informed that unfortunately, because of prevailing bad weather conditions, the skydiving by Akash Ganga skydiving team, Indian Air Force, won't be in the program today. Mesdames et messieurs, distingués invités, on vous informe qu'à cause du mauvais temps, le skydiving by Akash Ganga skydiving team, Indian Air Force, n'aura malheureusement pas lieu. Merci. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we are honored to witness the conferment of insignia, a momentous occasion marking the first time this highest distinction is being awarded as part of the National Day celebrations. The insignia is the highest distinction awarded by the Republic of Mauritius, recognizes exceptional contribution and service to the nation. This prestigious honor will be conferred upon our esteemed chief guest, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, as a mark of appreciation for his unwavering commitment to strengthening the bonds of friendship and cooperation between our nations. To do this honor, I now invite His Excellency, the President of the Republic, to kindly come forward for this historic occasion. And now it is with great honor I invite our chief guest, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, to come forward and receive this prestigious insignia in recognition of his outstanding contribution to our enduring partnership. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now my distinct honor to invite His Excellency, the President of the Republic of Mauritius, to present, on the advice of Dr. the Honorable Navin Chandra Hambulam, GCSK, FRCP Prime Minister, the award of Grand Commander of the Order of the Star and to His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic. Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. I now kindly invite His Excellency Shri Narendra Modi to address the gathering.
of Mauritius, His Excellency Ramdev Gopalji, Prime Minister, His Excellency Navin Chandra Ram Gulamji, sisters and brothers of Mauritius, I express my heartfelt gratitude for being confirmed the highest national award of Mauritius. This is not just my honor, it is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. And it is a symbol of the shared hopes and aspirations of the global South. I accept this award with full humility and gratitude. I dedicate it to your ancestors who came from India to Mauritius centuries ago, and to all their generations. Through their hard work, they wrote a golden chapter in the development of Mauritius and contributed to its vibrant diversity. I also embrace this honor as a responsibility. I reaffirm our commitment that we will continue to make every effort to enhance India-Mauritius strategic partnership to greater heights. Thank you. Thank you very much. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor of calling upon Dr. the Honorable Distinguished guests, ladies and gentlemen, on behalf of everyone present, I extend my sincere gratitude to His Excellency, the President of the Republic of Mauritius, His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, and Dr. the Honorable Prime Minister. This concludes the insignia ceremony. I kindly request the dignitaries to return to their seats as we continue our National Day celebration. In a short while, we will turn to a cultural program that reflects the rich diversity and unity of our nation. Due to bad weather, this cultural program might delay a little bit. Independent Mauritius is a vibrant cultural mosaic built from the many traditions and heritage that form our society. This cultural tapestry
is held together by the cement of understanding, mutual respect and tolerance. As we reflect on the theme of this year's National Day celebrations, as one people, as one nation, proudly celebrating 57 years of independence and 33 years as a republic, we are reminded of the strength in our unity and the pride we take in our collective achievements. Happy National Day celebrations to all citizens of Mauritius here and around the world. Mesdames et messieurs, distingués invités, concernant le spectacle culturel, avec le mauvais temps ici au Champ de Mars, ça va être probablement légèrement décalé. Spectacle qui est une célébration du peuple mauricien, de sa capacité à s'exprimer, à se rencontrer, à se réinventer. C'est à travers cette expression portée par la diversité, le dialogue entre cultures, que s'est construite notre nation. Comment nos racines dialoguent-elles avec notre présent? Comment l'héritage de nos ancêtres continue-t-il d'inspirer notre identité mauricienne d'aujourd'hui et de demain? Dans une scénographie immersive où les reliefs, les images et les éléments de notre patrimoine, les arts deviennent le langage de cette traversée. Danse, musique, chant, photographie, vidéo, peinture et art numérique s'entrelacent pour raconter une histoire en perpétuelle évolution où le passé, le présent et l'avenir se rejoignent dans un même élan. Les décors, inspirés de nos paysages, de nos îles et de l'océan qui nous entoure, incarnent les espaces dans lesquels nous vivons et rêvons. Les marches de la Seine, symbole de progression, d'effort et d'élévation, accueillent les artistes et musiciens, créant une fresque vivante. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this very site, Champ de Mars, Port Louis, is very historic. 57 years ago, this very place, the Union Jack was lowered and the Mauritius flag was raised for the very first time, marking the birth of our independent nation. We owe this historic achievement to the collective efforts and countless individuals whose courage, vision and unwavering commitment to freedom paved the way for a new era under the leadership of Sir Siltigargar Rambulan, the father of the nation. Independence was not just a political milestone, but the foundation upon which our nation was built, a journey of perseverance, development and national unity. Mesdames et messieurs, distingués invités, les artistes qui vont devoir attendre que ça se calme légèrement. Nous vous remercions de votre patience. Merci d'être avec nous, en tout cas ici au Champ de Mars, pour ces célébrations. Il y a eu depuis 1968 des défis socio-économiques relevés par des générations de citoyens de la République et les efforts continuent dans un contexte difficile. Le 12 mars qui est aussi l'occasion d'avoir une pensée à tous les citoyens pour leur contribution afin de faire avancer la République.
On a eu droit, en tout cas, à des moments historiques ici au Champ de Mars en ce 12 mars 2025. Le quadricolore qui flotte très haut dans le ciel cornusien. On aura vécu de très grands moments autour du drapeau national, voire des moments historiques, que ce soit sur le plan local qu'international. Le quadricolore qui a flotté pour la première fois ici même au Champ de Mars en 1968 en présence du père de la nation, Sassou Sayar Angoulane. Ceux et celles qui ont vécu ce moment sont témoins de la lutte pour l'indépendance et les émotions du 12 mars 1968 en voyant pour la première fois le quadricolore flottant très haut. Le rouge, bleu, jaune et vert qui ne passe pas inaperçu à travers le monde. Mention également pour nos sportifs qui ont toujours donné le meilleur d'eux-mêmes à chaque occasion qui se présente pour faire briller le quadricolore. Et d'ailleurs, certains d'entre eux étaient présents aujourd'hui pour le March Past. Il y a également eu l'hymne national. Et puis, pour rappel, aujourd'hui, le caporal Richardson et la Women Police Sergeant Regina ont eu l'honneur de hisser le quadricolore en haut du bas. Sous la pluie, ici donc au Champ de Mars, pour les célébrations du 57e anniversaire de l'accession de Maurice à l'indépendance et du 33e de la République. Et vous l'aurez aperçu, il y a aussi une bonne foule présente aujourd'hui pour venir célébrer, et nous remercions également les membres du public qui ont fait le déplacement. Since 1968, the national anthem and the national flag has become an important part of our history. The lyrics of the national anthem of the country were written by well-known Mauritian poet Jean-Georges Prosper, and the music was composed by Philippe Gentil, a former inspector of police of the police band. So today, 12th March, is once again an opportunity to express our patriotism, our sense of belonging to the Mauritian nation, to a country built on great values like peace, solidarity, national unity. Independence has brought along a wave of development and economic progress in the island. And despite the rain, the public present here are still at the Champ de Mars, showing their patriotism. En tout cas, mesdames et messieurs, distingués invités, tout ce que vous avez vu, vous avez assisté, vous avez vécu ici au Champ de Mars aujourd'hui, il y a des jours et des jours de répétition pour tout mettre en place.
On salue au passage ces hommes et ces femmes, ces jeunes, les sportifs qui ont fait le déplacement pendant les derniers jours pour venir aux répétitions et pour faire de cet événement un succès. On va parler de l'hymne national, écrit par Jean-Georges Rasper et composé par Philippe Gentil en 1968. C'était bien sûr pour la célébration de l'indépendance. Aujourd'hui, comme invité d'honneur, dans ces célébrations, bien sûr, le Premier ministre de la République de l'Inde, son Excellence Shri Narendra Modi. As our chief guest prepares to depart the Champ de Mars, we extend our deepest gratitude for his participation in today's celebrations. His presence has greatly enriched this occasion, symbolizing the strong ties of friendship and cooperation between Mauritius and India. We thank him for honoring us with his time and leadership. तो आप देख रहे थे मॉरिशस से सीधा प्रसारण, जहां मॉरिशस का 57वां राष्ट्रीय दिवस समारोह चल रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया था। और ये दूसरी बार है जब स्वयं प्रधानमंत्री मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। पिछले साल हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी इसी समारोह Our continued coverage of Prime Minister Narendra Modi's visit to Mauritius. The Prime Minister will be visiting Ganga Talao in a little while from now. It's the most revered sacred place for Hindus in Mauritius. Well, India's Prime Minister Narendra Modi is on a two-day visit to Mauritius, and he began his day two, in fact, of his visit by holding a number of meetings with key leaders. The Prime Minister, Narendra Modi, met the former Prime Minister of Mauritius, Pravind Jugnauth. Pravind Jugnauth had called on Prime Minister Modi. They held discussions on enhancing the Indo-Mauritius relationship and cooperation. Prime Minister Modi also met the leader of the opposition. The leader of the opposition is Georges Lechoghar, and they had a fruitful deliberation on further strengthening the India-Mauritius friendship. Prime Minister Modi and his Mauritian counterpart Naveen Chandra Ramgoolam jointly addressed the press as well. In fact, the leaders, they witnessed the exchange of key agreements. These memorandums of understanding include local currency settlement system, a credit facilities agreement. There's an agreement now on training program for diplomats. There's a technical agreement on the sharing of white shipping information.
an MOU between Financial Crimes Commission of Mauritius and the Enforcement Directorate of India. There's also cooperation, an MOU on cooperation in the field of micro, small and medium enterprises and on training of public officers. There's an MOU on ocean information as well. Earlier, Prime Minister Modi and Ram Ghulam, they held delegation level talks. The first segment will be dedicated to the exchange of 8 memoranda of understanding, followed by the handing over of a navigation chart on Saint-Brandon. The exchange of the first 4 MOUs will be carried out by Ambassador Roy Bisundayal, Secretary for Foreign Affairs, on behalf of Mauritius, and Shri Vikram Mishri, Foreign Secretary, on behalf of India. May I invite the 2 Foreign Secretaries to move forward, please. I have the honor to invite Dr. the Honorable Naveen Chandra Ramgoolam and His Excellency Shri Narendra Modi to rise and come forward to witness the exchanges, please. The first exchange will be the MOU between the Central Bank of Mauritius and the Reserve Bank of India on local currency settlement system. The second exchange will be the credit facility agreement between the Government of Mauritius and the State Bank of India to finance projects being implemented by the Central Water Authority under the Pipe Replacement Programme. The third exchange will be the MOU between the Institute of Foreign Service of India and the Ministry of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade of Mauritius on training program for diplomats. The fourth exchange will be the technical agreement on the sharing of white shipping information between the Indian Navy and the Mauritius Police Force. Thank you. I kindly request the Foreign Secretary of India to take his seat, please. I now invite His Excellency, Mr. Anurag Srivastava, the High Commissioner of India to Mauritius, to join Ambassador Roy Bisundayal for the exchange of the remaining 4 agreements. The fifth exchange will be the MOU between the Financial Crimes Commission of Mauritius and the Directorate of Enforcement of India.
The sixth exchange will be the MOU between the Ministry of Industry, SMEs and Cooperatives of Mauritius and the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises of India on cooperation in the field of micro, small and medium enterprises. The seventh exchange will be the MOU between the Ministry of Public Service and Administrative Reforms of Mauritius and the National Centre of Good Governance, Department of Administrative Reforms and Public Grievances of India on training of public officers. The eighth exchange will be the MOU between the Indian National Centre for Ocean Information Services, Ministry of Earth Sciences of India, and the Department for Continental Shelf, Maritime Zones Administration and Exploration, Prime Minister's Office of Mauritius. We now proceed with the handing over of a navigation chart on Saint-Brandon. Thank you. May I now invite Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency the Prime Minister of India to take their seats, please. I also invite the Secretary for Foreign Affairs to return to his seat. We now proceed with the second segment of today's event. We will now watch a video clip on the Area Health Center in Cap Malheureux and 20 community development projects in Mauritius, including Rodrigues. These projects are funded through grant assistance from the Government of India under the High Impact Community Development Project Scheme. I invite you to watch the screen in front of you. India-Mauritius, a timeless partnership. India and Mauritius share a deep-rooted relationship built on history, ancestry, culture, and language. Over the decades, this bond has strengthened through cooperation in maritime security, trade, education, culture, and global diplomacy. A key pillar of this partnership is India's extensive development support, shaping Mauritius's social and infrastructural landscape. From the Metro Express project and new Supreme Court building to the social housing project, ENT hospital, and digital e-tablets for students, India has played a crucial role in transformative projects. Initiatives like the Swami Vivekananda International Convention Center, World Hindi Secretariat, and renewable projects such as an 8-megawatt solar energy project further highlight India's commitment. Beyond large-scale projects, India's high-impact community development projects have touched grassroots communities, launching 96 projects since 2022. Sports complexes, children's playground, solar initiatives, and disaster preparedness projects across Mauritius and its outer islands. Guided by the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, India's support is not just about infrastructure, but about fostering well-being, prosperity, and strong ties between our nations. Today, PM Narendra Modi and PM Dr. Naveen Chandra Ramgulam will jointly inaugurate the Area Health Center and 20 high-impact community development projects. The Area Health Center will offer comprehensive medical services, including diabetes care, maternal health, and rehabilitation. The 20 high-impact community development projects will enhance the well-being of Mauritians and improve their quality of life. Together, we contribute to build a brighter future for all Mauritians. Thank you. We now proceed with the e-inauguration of the Area Health Center in Cap Malheureux, followed by the e-inauguration of the 20 community development projects. I have the honor to invite Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency the Prime Minister of India to take the respective remotes from the side tables, please.
Your Excellencies, to proceed with the inauguration of the Area Health Center in Cap Malheureux, may I invite you to press the button. To proceed with the inauguration of the 20 community development projects, may I again invite Your Excellencies to press the button. Thank you, Excellencies. We now move to the final segment of our program. May I invite Dr. the Honorable Naveen Chandra Ramgoolam and His Excellency Shri Narendra Modi to move to the lectern for their respective statements to the media, please. Well, first of all, good morning. Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, the Deputy Prime Minister, Honorable Paul Béranger, Madam Speaker, Ministers, Junior Ministers and distinguished guests, and members of the media. His Excellency Shri Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, has honored us by his presence amidst us on the occasion of the National Day celebrations of the 57th anniversary of our independence. His distinguished presence on this momentous occasion is testimony to the unique and very special relations which bind our two countries. It will be recalled that while formal diplomatic relations were established in 1948, our people-to-people ties go back to centuries. The resounding success of the community event held last evening at the Triano Convention Center, which gathered both Mauritian citizens and members of the Indian diaspora, was a clear illustration of the vibrancy of shared cultural heritage. I am proud to underscore the dynamic partnership between our two countries. Mauritius, as we are well aware, continues to benefit from Indian assistance for its socio-economic development. The signature of key agreements in wide-ranging sectors, such as those we have just witnessed today, covering such diverse sectors as crime investigation, maritime traffic monitoring, infrastructure, diplomacy, commerce, capacity building, finance and ocean economy, as well as the handing over, which we just saw, of the navigation charts of Saint-Brando, have further enhanced our already excellent bilateral relations. Let me also highlight the assistance provided by the Government of India in the implementation of the high-impact community development projects, 20 community projects, as well as the Area Health Center at Cap Malheureux, which we inaugurated today. These projects, which relate to the renovation of playgrounds, community and health centers across Mauritius, Rodrigues and Agadiga, will no doubt contribute to the improvement of the quality of life of our citizens. During this visit, the Prime Minister of India and myself had very constructive discussions on how to take our bilateral relations to even greater heights. In this perspective, I am pleased to announce that His Excellency Shri Narendra Modi and myself have further agreed to strengthen our relations through a Mauritius-India joint vision document for an enhanced strategic partnership. Our shared vision is to increase our cooperation in existing and emerging sectors,
such as space research, artificial intelligence, digital health, ocean economy, pharmaceuticals, ICT, fintech, and cybersecurity. We are grateful that India will continue to assist Mauritius in modernizing our health sector. In this respect, we will collaborate closely on programs aimed at drug de-addiction and rehabilitation. Our two countries will continue to reinforce trade relations through the Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement and set up such innovative mechanisms that would further facilitate exchanges for our mutual benefit. Climate emergency is another avenue which we have agreed to cooperate to address and mitigate the existential threats for small island developing states like Mauritius. We look forward to firming up our cooperation in the maritime sector as well. Ladies and gentlemen, I cannot conclude without repeating our deep gratitude for India's unflinching support to the long-standing struggle of Mauritius to exercise its full sovereignty over its entire territory. Shri Narendra Modi, beyond your principled and unflinching support, we thank you once again for your pivotal role in this respect and for being a respected, strong voice in the favor of Mauritius. Built on mutual respect, shared values, and a long history of cooperation, our bilateral relations are continually reinforced through our commitment to progress. During my previous 10 years as Prime Minister, I have endeavored to strengthen and expand this treasured relationship, and I have no doubt our relationship will now reach even higher levels, and it will benefit both our peoples and countries. Thank you, Mr. Prime Minister. Your Excellency, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जी, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के सभी साथी, नमस्कार। बौजूर 140 करोड़ भारतीयों की ओर से मैं मॉरिशस के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे दोबारा मॉरिशस के नेशनल डे पर आने का अवसर मिल रहा है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी का और मॉरिशस सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं, बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। प्राकृतिक आपदा हो या कोविड विपदा, हमने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने संबंधों में कई नए आयाम जोड़े हैं। विकास सहयोग और क्षमता निर्माण में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। मॉरिशस में गति के लिए मेट्रो एक्सप्रेस,
न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग, सुखद प्रवास के लिए सोशल हाउसिंग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ईएनटी हॉस्पिटल, व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई और रुपे कार्ड, किफायती और बेहतर क्वालिटी वाली दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र, ऐसे कई पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स हैं जिन्हें हमने समयबद्ध तरीके से पूरा किया है। अगालेगा में बेहतर कनेक्टिविटी से साइक्लोन चीदों से प्रभावित लोगों तक मानवीय सहायता तेजी से पहुंचाई जा सकी। इससे कई जानें बचाई जा सकी। अभी हमने काप मेलेरे एरिया हेल्थ सेंटर और 20 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिलेगा। साथियों, आज प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। साथियों, प्रधानमंत्री जी और मैं सहमत है कि रक्षा सहयोग और मैरीटाइम सिक्योरिटी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। मॉरिशस में पुलिस अकादमी और नेशनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर, इसकी स्थापना में भारत सहयोग देगा। व्हाइट शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी और हाइड्रोग्राफी, इस पर सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। चागोस के संदर्भ में हम मॉरिशस की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन और इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जैसे मंचों के तहत हम सहयोग बढ़ाएंगे। साथियों, पीपल टू पीपल संबंध हमारी भागीदारी को मजबूत नींव प्रदान करते हैं। डिजिटल हेल्थ, आयुष सेंटर, स्कूल एजुकेशन,
स्किलिंग और मोबिलिटी में सहयोग बढ़ाया जाएगा। हम एआई और डीपीआई यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मानवीय विकास में उपयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। मॉरिशस के लोगों के लिए भारत में 4 धाम यात्रा और रामायण ट्रेल के लिए सुविधा दी जाएगी। गिरमिट धरोहर के संरक्षण और संवर्धन को बल दिया जाएगा। साथियों, ग्लोबल साउथ हो, हिंद महासागर हो या अफ्रीका भूभाग, मॉरिशस हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। 10 वर्ष पहले विजन सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन की आधारशिला यहीं मॉरिशस में रखी गई थी। इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता और समृद्धि के लिए हम सागर विजन लेकर चले हैं। आज इसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ग्लोबल साउथ के लिए हमारा विजन रहेगा सागर से आगे बढ़कर के महासागर, यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। इसमें ट्रेड फॉर डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और म्यूचुअल सिक्योरिटी फॉर शेयर्ड फ्यूचर की भावना समाहित है। इसके तहत टेक्नोलॉजी शेयरिंग, कंसेशनल लोन और ग्रांट के माध्यम से सहयोग किया जाएगा। एक्सेलेंसी, एक बार फिर मॉरिशस में मिले आत्मीय स्वागत के लिए मैं आपका और मॉरिशस के लोगों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आपको भारत यात्रा करने के लिए निमंत्रण देता हूं। आपका भारत में स्वागत करने के लिए हम तत्परता से प्रतीक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Excellencies. Before closing the final segment of our program, I invite Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency, the Prime Minister of India, to move to the center of the stage for a photo souvenir. Thank you, Excellencies. Excellencies, ladies and gentlemen, we have reached the end of this function. Can you remain seated as Dr. the Honorable Prime Minister of Mauritius and His Excellency the Prime Minister of India depart? Thank you again. तो पोर्ट लुइस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसमें कई समझौते बेहद अहम हैं। दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर आदान प्रदान में सेंट्रल बैंक ऑफ मॉरिशस और आरबीआई के बीच समझौता शामिल है। क्रेडिट फैसिलिटी एग्रीमेंट को लेकर सहमति बनी है। इंडियन नेवी और मॉरिशस पुलिस के बीच समझौता हुआ है और एमएसएमई के क्षेत्र में भी भारत और मॉरिशस के बीच समझौता हुआ है। वहीं साथ ही साथ ये देखा गया है कि किस तरह से अन्य समझौतों में लोकल करेंसी को लेकर भी एक सेटलमेंट सिस्टम पर एग्रीमेंट हुआ है। इसी के साथ इंडियन नेवी के साथ समझौता हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के साथ समझौता हुआ है। तो 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके बाद मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री की नेतृत्व क्षमता और उनके नेतृत्व में मॉरिशस में जो महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस जी, मंत्रिपरिषद के मेरे वरिष्ठ साथी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, संजय सेठ जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके साथ आज हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी, सीडीएस, सीएनएस, नेवी के सभी साथी, मझगांव डॉकयार्ड में काम करने वाले सभी साथी, अन्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों, 15 जनवरी के दिन को आर्मी डे के रूप में भी मनाया जाता है। देश की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले प्रत्येक जाबाज को मैं नमन करता हूं। मां भारती की रक्षा में जुटे हर वीर वीरांगना को मैं आज के दिन बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भारत में नौसेना को नया सामर्थ्य दिया था, नया विजन दिया था। आज उनकी इस पावन धरती पर 21वीं सदी की नेवी को सशक्त करने की तरफ हम एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन, तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात कि ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स मेड इन इंडिया है। मैं भारतीय नौसेना को, इनके निर्माण कार्य से जुड़े सभी साथियों को, इंजीनियर्स को, श्रमिकों को और पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज का एक कार्यक्रम हमारी गौरवशाली धरोहर को भविष्य की आकांक्षाओं से जोड़ता है। लंबी समुद्री यात्राएं, कॉमर्स, नेवल डिफेंस, शिप इंडस्ट्री, इसमें हमारा एक समृद्ध इतिहास रहा है। अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हुए आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं, उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज बागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन
कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन बागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हम सागर के विजन के साथ आगे बढ़े। जब भारत के सामने G20 की प्रेसिडेंसी संभालने का दायित्व आया तो दुनिया को हमने मंत्र दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। जब दुनिया कोरोना से लड़ते हुए पस्त पड़ रही थी तब भारत ने विजन दिया वन अर्थ, वन हेल्थ। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चलते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास उस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं और इसलिए इस पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा भी भारत अपना दायित्व समझता है। साथियों, ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स और जियो पॉलिटिकल डायनेमिक्स को दिशा देने में भारत जैसे मैरीटाइम नेशन की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। इसलिए आज जरूरी है कि समुद्र को सेफ और प्रॉस्परस बनाने में हम ग्लोबल पार्टनर बने। हम लॉजिस्टिक की एफिशिएंसी बढ़ा दें और शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम करें। हम रेयर मिनरल्स, फिश स्टॉक जैसे ओशन रिसोर्सेज का दुरुपयोग रोकने में और इसे मैनेज करने की कैपेसिटी डेवलप करें। हम न्यू शिपिंग रूट्स और सी लेन्स पर अब कम्युनिकेशन को खोजने में इन्वेस्ट करें। मुझे खुशी है कि आज भारत इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनकर उभरा है। बीते कुछ महीनों में ही हमारी नौसेना ने सैकड़ों जानें बचाई हैं। हजारों करोड़ रुपए के नेशनल और इंटरनेशनल कार्गो की सुरक्षा की है। इससे
दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ा है, आप सबके कारण बढ़ा है, और इसलिए मैं आज आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। भारतीय नौसेना, कोस्ट गार्ड, उन पर यह लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। आज आप ही देख रहे हैं, आसियान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, गल्फ हो, अफ्रीका के देश हो, सबके साथ आज भारत का आर्थिक सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। संबंधों की इस मजबूती में इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है, और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। इसके लिए निरंतर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का गठन ऐसा ही एक रिफॉर्म है। हमारी सेनाएं और अधिक एफिशिएंट हो, इसके लिए थिएटर कमांड की दिशा में भी भारत आगे बढ़ रहा है। साथियों, पिछले 10 साल में जिस तरह भारत की तीनों सेनाओं ने आत्मनिर्भरता के मंत्र को अपनाया है, वो बहुत ही सराहनीय है। संकट के समय दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम हो, इस गंभीरता को समझते हुए आप सभी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं। हमारी सेनाओं ने 5000 से ज्यादा ऐसे साजो सामान और उपकरणों की लिस्ट तैयार की है जो अब वो विदेशों से नहीं मंगाएगी। जब भारत का सैनिक भारत में बने साजो सामान के साथ आगे बढ़ता है तो उसका आत्मविश्वास भी कुछ अलग ही होता है। पिछले 10 साल में कर्नाटका में देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। सेनाओं के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने वाली फैक्ट्री शुरू हुई है। तेजस फाइटर प्लेन के भारत की साख को आसमान की नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। यूपी और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर्स डिफेंस प्रोडक्शन को और गति देने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि हमारी नेवी ने भी मेक इन इंडिया अभियान का बहुत अधिक विस्तार किया है। इसमें मझगांव डॉकयार्ड के आप सभी साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात
जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। मेक इन इंडिया, उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। साथियों, मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। अब सोचिए, अभी देश में 60 बड़े शिप्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। इनकी वैल्यू 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। यानी इतना पैसा लगाने से करीब 3 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में होगा। और रोजगार के मामले में तो इसका 6 गुना मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जहाजों का ज्यादातर सामान, ज्यादातर पार्ट्स देश के एमएसएमई से ही आता है। इसलिए अगर 2000 वर्कर एक जहाज बनाने के काम में लगते हैं तो दूसरी इंडस्ट्री में जो एमएसएमई सप्लायर है उस एमएसएमई सेक्टर में करीब 12,000 रोजगार बनते हैं। साथियों, आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारी एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले सालों में सैकड़ों नए शिप्स की, नए कंटेनर्स की जरूरत भारत को होगी। इसलिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मॉडल हमारी इकोनॉमी को गति देने वाला है, रोजगार के हजारों नए मौके बनाने वाला है। साथियों, इस क्षेत्र में कैसे रोजगार बढ़ रहा है, इसका एक उदाहरण सी फेरर्स की संख्या भी है। 2014 में भारत में सी फेरर्स की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी। आज ये 2 गुने से भी अधिक बढ़कर लगभग 3 लाख तक पहुंच चुकी है। आज भारत सी फेरर्स की संख्या में विश्व में टॉप 5 में आ गया है। साथियों, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े निर्णयों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से हमने नई नीतियां बनाई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए हैं। देश के हर कोने, हर सेक्टर का विकास हो, इस लक्ष्य के साथ हम चल रहे हैं। पोर्ट सेक्टर का विस्तार भी इसका ही हिस्सा है। हमारे तीसरे टर्म के पहले बड़े फैसलों में से था महाराष्ट्र के वाढवण पोर्ट को मंजूरी। 75,000 करोड़ रुपए के खर्च से इस आधुनिक पोर्ट के निर्माण का काम शुरू भी हो चुका है। इससे भी महाराष्ट्र में रोजगार के हजारों नए अवसर बनने वाले हैं। साथियों,
बहुत लंबे समय तक बॉर्डर और कोस्टलाइन से जुड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। बीते 10 सालों में इसके लिए भी अभूतपूर्व काम हुआ है। 2 दिन पहले ही मुझे जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग टनल का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इससे करगिल, लद्दाख जैसे हमारे सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना उसमें बहुत आसानी होगी, सुलभ होगी। पिछले साल अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल का लोकार्पण हुआ है। ये एलएसी तक हमारी सेना की पहुंच को आसान बना रही है। आज शिंकुल्ला टनल और जोजिना टनल जैसे अनेक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम चल रहा है। भारत माला परियोजना से बॉर्डर एरिया में शानदार नेशनल हाईवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आज बॉर्डर के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। बीते दशक में अपने दूर सुदूर के आइलैंड पर भी हमने फोकस किया है। जहां कोई भी नहीं रहता, उन आइलैंड्स की भी रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, अब उस आइलैंड की नई पहचान भी बनाई जा रही है, उन्हें नया नाम दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में समुद्र तल पर भी जो समुद्री पर्वत या सी माउंट है, उनका भी नामकरण किया जा रहा है। पिछले साल भारत की पहल पर इंटरनेशनल संस्था ने 5 ऐसे स्थानों को नाम दिए हैं। हिंद महासागर में अशोक सी माउंट, हर्षवर्धन सी माउंट, राजराजा चोल सी माउंट, कल्पतरु रीज और चंद्रगुप्त रीज भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं भविष्य में असीम अंतरिक्ष और डीप सी दोनों का कितना महत्व है। इसलिए आज स्पेस और डीप सी दोनों जगह भारत अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। हमारा समुद्रयान प्रोजेक्ट वैज्ञानिकों को समंदर में 6000 मीटर की उस गहराई तक ले जाने वाला है जहां कुछ ही देश पहुंच पाए हैं। यानी भविष्य की किसी भी संभावना पर काम करने में हमारी सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। साथियों, 21वीं सदी का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलामी के प्रतीकों से भी मुक्त हो। और हमारी नौसेना ने इसमें भी नेतृत्व दिखाया है। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है। नेवी ने एडमिरल रैंक के एप्लेट भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे, वो हमें मिलकर करना है। हमारे दायित्व अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका ध्येय एक ही है, विकसित भारत। आज जो ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म देश को मिले हैं, इनसे हमारे संकल्प को मजबूती मिलेगी। और साथियों, जरा हल्की फुल्की बात करनी है तो मेरा अनुभव रहा है, मैं सेना के जितने भी कार्यक्रमों में गया हूं, अगर खाने में सबसे उत्तम व्यवस्था किसी में है तो नेवी में है।
विविधताओं से भरपूर। अब आज उसमें सूरत सिर्फ जुड़ गया है और हम लोगों को एक कहावत मालूम होगी, बड़ी पॉपुलर कहावत है और मैं कैप्टन संदीप को कहूंगा कि इस बात को जरा गौर से सुने। वो कहावत है, सूरत का जमण और काशी का मरण। यानी सूरत का जो भोजन होता है वो उतना ही महान होता है, श्रेष्ठ होता है। अब जब सूरत लॉन्च हो रहा है तो मुझे विश्वास है कैप्टन संदीप सुरती खाना भी लोगों को खिलाएंगे। साथियों, ये बहुत ही उत्तम अवसर है। पूरा देश आपको शुभकामनाएं दे रहा है, पूरा देश गौरव से भर रहा है और इसीलिए एक नए विश्वास के साथ, नए उमंग और उत्साह के साथ, नए संकल्प के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम पूरे सामर्थ्य से जुड़े। आज के इस अवसर पर इन तीनों महत्वपूर्ण कदम के लिए, महत्वपूर्ण सौगात के लिए आप सबको बधाई देते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। कम से कम इस कार्यक्रम में वो आवाज सबसे ज्यादा गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।